Okay. Good morning, all. Thank you for joining on this bright Saturday morning. I'm Sanjay Pekam. I'm the founder of MoneySpring Financial Services. We help you to do the financial planning, which includes like understanding your risk appetite, trying to help you onto like complete solutions like your health insurance, life insurance, mutual fund investments, fixed deposit, gold bonds, and we do complete like end-to-end services. We represent all mutual fund companies in India, all insurance companies in India, general insurance, health insurance, anything you name it, we have it. And we have our complete online portal as well as mobile app and Android as well as on iPhone, iOS. आपको जो भी इन्वेस्टमेंट है रियल टाइम आपके मोबाइल फोन पे ऐप से ट्रैक कर सकते हो. You can do 24/7 transactions on it anytime. और आज के हमारे गेस्ट है एवरी वीक we try to cover you with the different topics. कि जैसे कि हर एक के क्वेश्चन में लाइक अभी स्टॉक मार्केट अप होता है डाउन होता है, हर एक के पास क्वेश्चंस होते हैं कि हाउ आई शुड डील विद दिस, वेदर इट इज राइट टाइम टू इन्वेस्ट, व्हेन टू इन्वेस्ट, हाउ मच टू इन्वेस्ट, राइट. उसके साथ में कि एक लोगों का रहता है कि जिस मार्केट के साथ इमोशंस रहते हैं, अरे अब गया, अरे मेरा पैसा डूब गया, कितना कब आएगा पता, ये सारे अपन इमोशंस के साथ खेलते हैं और देखते हैं, और उसके साथ में फिर हमें रहने की आदत लगनी चाहिए. तो उसके लिए हम एवरी टाइम एवरी वीक वी ट्राई टू ब्रिंग अ एक्सपर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री. So today we have got Mr. Vikram Mason, who is the from Edelweiss Asset Management Services. He is head of sales and training, and he comes with a rich experience of designing, developing, and delivering training programs across India. He has conducted so many workshops. Okay, तो हम चाहते हैं कि उनसे कोई अच्छी से सीखे. He has conducted n number of workshops. तो हमें उनका बिजी स्केड्यूल से आज हमारे को उनका टाइम मिला है, तो हम चाहते हैं कि आप उसका पूरा फायदा उठा लीजिए और उनको क्वेश्चंस भी पूछिए कि आपको जो भी क्वेश्चंस है उनको चैट बॉक्स में अभी टाइप कीजिए. उनका सेशन होने के बाद आप उनको लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सो दैट ऑल ऑफ अस कैन बेनिफिट. तो हमारा आइडिया है कि सब अपना जो भी इन्वेस्टमेंट करे एक पूरा के साथ, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ करो, और भी स्पेसिफिक गोल माइंड में लेके करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है. तो आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू मिस्टर विक्रम. मिस्टर विक्रम, ओवर टू यू. Thank you, Sanjay ji, for that, and good morning and very warm welcome आप सबको on this Saturday morning जहाँ पे हम सब कनेक्ट कर रहे हैं. And very honestly, just one humble request आप सबसे, आप प्लीज अपने आप को अगर म्यूट पे रखेंगे तो it will be beneficial for all of us. एक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है. I think somebody is unmuted, and it is only going to cause disturbance to everyone else. So request करूंगा आप सबसे to please keep yourself on mute. That will help. आप क्या कीजिए मिस्टर विक्रम, आप सबको होस्ट हो आप, तो यू कैन म्यूट एवरीबॉडी. No, I know, but it's better कि मैं consciously खुद करूँ. That's something which helps. I think like everybody is now good. So yeah. Okay, great. Okay, so very honestly, आज का जो topic है, I am personally very excited and want to talk on this because मेरे हिसाब से जो करंट मार्केट सिचुएशन है, आई एम प्रिटी श्योर कहाँ ना कहाँ हम सब अपनी इमोशंस के साथ सोचकर कहाँ ना कहाँ इस मार्केट में क्या हो रहा है वो हमारी इमोशंस बहुत ज्यादा टू द फ्रंट आ जाती है. एंड हेंस आई थिंक दिस इज वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, आई एम प्रिटी श्योर हम सब अग्री करेंगे कि being emotional during the course of our investment journey, अगर मैं
इमोशंस को अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में कहा ना कहा ज्यादा ज्यादा वेट दूंगा, देन वो कहा ना कहा मेरे इन्वेस्टमेंट्स के लिए हानिकारक है. इट्स नॉट गुड फॉर माय इन्वेस्टमेंट्स. एंड मेरा पर्सनल एंडेवर ये रहेगा कि हम आज बात करें उन स्ट्रेटजीज के ऊपर, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजीज, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजीज which you can deploy to keep your emotions out of your investment journey. ओके, सो ये हमारा आज का एजेंडा रहेगा. हम स्टार्ट करेंगे इमोशंस क्या होती है, कौन सी इमोशंस है जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है. एंड लास्टली वी विल लुक एट 5 स्ट्रेटजीज जो हम सबको हेल्प कर सकती है टू कीप दीज वेरी इमोशंस आउट ऑफ माय इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग पहले. एंड अगर मैंने इन्वेस्टमेंट कर ली तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे ये इमोशंस को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ताकि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स का ऑप्टिमल बेनिफिट ले सकूं. So that is going to be my agenda, and I'll be very happy to respond to your queries and questions. तो आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस आती है at any point in time, जैसे संजय जी भी कह रहे थे, you can keep it on mute, you can put it in the chat box, and at the end I will be more than happy to respond to them. Okay, so that's going to be our agenda, and उसी पे हम शुरू करते हैं our discussion today. And let us start with what emotions are. I'm pretty sure emotions के बारे में हम सब, I mean we are all at some point in time or for something or the other emotional, right? So emotions हम सब में हैं. But emotions होती क्या? Emotions basically एक subjective state of mind है. मतलब कि मैं जैसा फील कर रहा हूं उस फीलिंग्स के बेसिस पर my reactions can be different for the same thing. Let me give you an example. सोचिए आप हैप्पी है, खुश है, उस टाइम पे कोई आता है आपसे हेल्प मांगता है, बिकॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम आपकी फीलिंग एक पॉजिटिव फीलिंग है, हैप्पीनेस है. सो उस टाइम पे आप देखेंगे कि आप बिना सोचे हेल्प करने के लिए अपने आप को एक्सटेंड कर लेते हैं. सिमिलरली कॉन्वर्सली अगर हम देखें तो सोचिए कि यू आर सैड, एंड कुछ ना कुछ आपको तकलीफ हो रही है, यू आर फीलिंग सैड इन योर माइंड, एंड दैट इमोशन व्हिच इज रूलिंग यू एट दैट पॉइंट इन टाइम, सैडनेस. अगर उस टाइम पे कोई आपसे हेल्प मांगता है, द प्रोबेबिलिटी कि आप उसको ना करेंगे उस टाइम पे becomes very very high. There is a higher probability कि आप उसको बोलेंगे कि नहीं मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, इवन इफ वो बड़ा ही सिंपल चीज आपसे मांग रहा हो जो आप कर सकते हैं. बट उस टाइम पे मेरी फीलिंग्स जो है वो मुझे कहा ना कहा इतनी स्ट्रांगली कंट्रोल कर रही है, एंड दैट फीलिंग इज मोर टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ सैडनेस और व्हाटएवर वी वांट टू कॉल इट, that I instinctively at that point in time will say no. So what I'm trying to drive you with this is, मेरी जो emotions है at any point in time, वो मेरी reaction पे बहुत ही strong bearing रखती है. And emotions, very honestly, is a very, very natural thing, isn't it? In fact, there are people जो बहुत pride लेके बोलते हैं कि I am an emotional person, है ना? कुछ लोगों को अच्छा, I mean, I'm not saying whether right or wrong, but there are people who are extremely
मतलब वो जब कह रहे हैं कि आई एम एन इमोशनल पर्सन, वो बेसिकली कहते हैं कि मैं अपनी डिसीजंस बेस करता हूं ऑन व्हाट माय इमोशन इज एट दैट पॉइंट इन टाइम. Is it a great thing? I mean, in hindsight, I'm pretty sure हम सबको ये फीलिंग, हम सब ये रियलाइज करते हैं कि वो इमोशनल डिसीजन हमेशा मेरे फेवर में नहीं होता है. एंड वेरी ऑनेस्टली अगर हम हमारे फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में बात करें, सो I can tell you with certainty कि अगर हम इमोशंस को हमारे डिसीजन मेकिंग को ड्राइव करते हैं, so then the probability and possibility to optimize the potential of your money कहाँ ना कहाँ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. एंड वो बाद में आपको रियलाइज होता है कि ये मेरी इमोशनल डिसीजन थी, ये मुझे नहीं लेना चाहिए था. आगे बात करेंगे कौन सी वो इमोशंस है एंड ऑल ऑफ दिस, बट I can tell you that we all have gone through this cycle, and the way it works very honestly is emotional decision making कहाँ ना कहाँ जाके आपके आउटकम पे भी हेल्प को तो इम्पैक्ट करता ही है, बट इमोशनल डिसीजन मेकिंग ऑल्सो इम्पैक्ट्स the speed at which you make the decision. Let me give you an example. Okay, सोचिए आप excited है, at any point in time. जब आप excitement में होते हैं तो आपकी decision making quick होती है. कोई आपसे कुछ पूछते हैं, आप तुरंत जवाब देते हो. At the same time सोचिए आप afraid है, आप डर रहे हैं, तो उस टाइम पे uncertainty, cautiousness, मेरे माइंड में ज्यादा चलता है, एंड उसमें मैं decision making के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लेता हूँ. What we are very clearly trying to drive with this, or what I'm clearly trying to drive with this, is that emotional hona during decision making overall hamesha, or other more times than not, will not allow you to make an optimal decision that you should have taken. And ye in finance or in financial decision making आपको ज्यादा इम्पैक्ट करता है, बिकॉज हम सब जब इन्वेस्ट करते हैं हमारी एक थॉट होती है कि आई वांट टू मैक्सिमाइज माय रिटर्न टू माय कैपेबिलिटी, माय अंडरस्टैंडिंग एंड माय रिस्क टेकिंग एबिलिटी, राइट. बट अगर मैं अपने इमोशंस को उसको रूल करने दूंगा, देन मैं जो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, मेरा जो मनी इन्वेस्टेड है, उसके जो पोटेंशियल टू प्रोवाइड मी रिटर्न्स है, उसको कहाँ ना कहाँ कॉम्प्रोमाइज करता हूँ. सो दैट्स व्हाट इमोशंस आर. एंड 3 ब्रॉड इमोशंस के बारे में मैं पहले बात करूंगा विच इम्पैक्ट अस नेगेटिवली, एंड इनको चेक में रखना हमारे इन्वेस्टमेंट जर्नी में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट होती है. द फर्स्ट वन इज फियर. बहुत कॉमन, बहुत ही ऑब्वियस एंड समथिंग जो हम सबको कभी ना कभी लगा है. इनफैक्ट करंट मार्केट टाइम्स भी अगर हम देखें तो इट्स बीन क्वाइट वोलेटाइल, एंड जब मार्केट्स वोलेटिलिटी में आती है तो हमें लगता है ज्यादा डर, क्या होगा, मेरे पैसे डाले थे अब बन नहीं रहे, मुझे तो लगा था बनेंगे. एंड ये जो फेयर है वो मुझे इतना स्ट्रांगली एनगल्फ करता है दैट आई स्टार्ट थिंकिंग मैं यहाँ से पैसे निकाल देता हूँ, किधर और डालते, राइट. ये बहुत ही कॉमन चीज है, एंड ये हम सब में होता है. स्पेशली ये फेयर हमें ज्यादा हिट करता है when we are seeing in the markets going in on the downward side, या तो जब volatility
ज्यादा मार्केट में दिखती है. सो अगर हम Jan to let's say let's leave some part of July out, but अगर Jan to June देखेंगे, the first 6 months of the year, so we've seen markets being on the negative side more than being on the positive side. And ये कहा ना कहा मुझे क्वेश्चन करता है मेरे माइंड में पहले खुद. See, we are all somewhere hardwired to think, है ना, कि क्या हो रहा है, उसकी एनालिसिस करनी बहुत जरूरी होती है. एंड टुडे आगे जाके हम देखेंगे कि हाउ वी हैव सो मच इंफॉर्मेशन कि इट फोर्सेस मी टू रिएक्ट. सो जब मार्केट्स गिरती है तो मैं सोचता हूँ मैंने तो इन्वेस्टमेंट किया है, मैं देखूं इसमें क्या हो रहा है, मैं अपना पोर्टफोलियो चेक करता हूँ एंड मुझे लगता है यार ये मैंने ठीक नहीं किया था, दिस वाज नॉट द राइट डिसीजन, आई शुड टेक सम कोर्स करेक्शन. एट दैट पॉइंट इन टाइम दैट इवैल्यूएशन इज टेलिंग मी इट इज अ गुड डिसीजन टू मेक, because in the end I have to create money for myself, right? That's the idea of investment, but that's not happening because the markets are tanking now. But just go back to March 2020, 2 years back again. वहां पे एक जब pandemic announce हुआ था इंडिया में, there was panic selling. A lot of people sold, thinking कि अब मार्केट्स पता नहीं कब होगा, लॉकडाउन आ गया, इतनी सारे कंपनीज बंद है, blah 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 blah. And a lot of people sold their investments. But what you can very clearly see is that some people sold, some people bought, and very clearly, after about a month and a half, you saw the markets climbing up again. And जो investment करके रुका हुआ था, who did not panic at that point in time, were the ones who were very happy because the next 1.5 year was fantastic for them. So जब आपको ये fear जैसी feeling आती है, first things you have to recognize it. Second thing, you have to keep it in check, because ये fear में जो decision आप लेंगे वो आपके investments के लिए शायद later in hindsight जो आपकी डिसीजन होगी वो आप रिग्रेट करेंगे. सो दैट्स द फर्स्ट इमोशन जो आपको चेक पे रखना चाहिए, फियर. सेकंड इमोशन इसका डायमेट्रिकली ऑन द अदर साइड इज ग्रीड. ये भी मार्केट में बहुत दिखता है. जब मार्केट अच्छा चलता है, जब आपकी रिटर्न्स आती है, तो कहाँ ना कहाँ आपको लगता है कि wherever I will invest, I am making money, so I should increase my investment. I should invest more. यार इसमें तो मैंने बहुत कम डाला था, इतने पैसे बन गए, थोड़ा और डाल दो. Then I start getting greedy. I mean, and this greed that comes to my mind makes me take irrational decisions, जो शायद मेरी risk taking ability के बाहर है, जो शायद मेरी requirement के बाहर है. In fact, there are people who go and take a loan to invest, thinking that मेरे पैसे बन जाएंगे तो इसमें मैं easily दे दूंगा. Is that the best strategy? Personally, if you ask me, I don't think so. So in that sense, this second emotion is another very, very common emotion which you get from people, especially in a bull run. So you get fear in a negative slide. You get greed in a positive upside. जब market बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, very fast, it's moving up, I somewhere start feeling greedy. I think now is the time to make money. Now is the time to invest. और पैसे डाल देते हैं. Again, prudency of investment. Checking your investments. Keeping your risk profile in mind when you're making investments. ये सब चीजें उस टाइम पे फिर कहाँ ना कहाँ बैकसीट ले लेती है, बिकॉज मुझे लगता है मार्केट चल रहा है, अब तो अब तो मेरे अच्छे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो मैं फटाफट पैसे कमा लेता हूँ, बिकॉज एवरीथिंग लुक्स गुड. We all know that the market nature is such that it will be going up on a few days, it may correct on a few days. I need to be prudent with my investment decisions. I cannot afford to either get too fearful
or too greedy when it comes to investing in the market. ये greed अगर हम recent phenomenon में देखेंगे तो I would say sometime between the month of June to October of last year, people thought that अरे इतना अच्छा पैसा, इतना अच्छा रिटर्न आ रहा है, मुझे और डालनी चाहिए. Everyone was thinking very I mean bullishly, positively about the market. Nothing wrong with thinking like this, but and if you have spare money and you have a horizon for a longer period of time, please look at that. But instant gratification की ये तो अब देखो मैं 6 महीने में बहुत अच्छा बना के दूंगा, 25, 30%, 40% बनेगा, ये शायद मार्केट्स में हर टाइम पॉसिबल नहीं है. You need to keep that emotion in check. वो नहीं होता है. I mean, you got that run, fantastic, but will that run continue every 6 months? Then मतलब हर 1.5-2 साल में अगर मेरे पैसे डबल हो जाते, शायद हम में से काफी लोग काम नहीं कर रहे होते. You don't need to work, right? I mean, you created something, अब ये पैसा आपका पैसा बना के देगा and you're fine. But it doesn't work like this. We cannot afford to get so greedy. Markets will somewhere, put me back in place. Tell me कि boss, level headed हो जाओ, ये बहुत ज्यादा तुम उड़ रहे थे. And that happens with the best of us. So greed. Second emotion जो हमें ध्यान रखना चाहिए is not be too greedy in the market. एक और emotion, which we feel whenever we invest in the market. I mean, ये emotion, fear and greed जैसा इतना जल्दी नहीं आता, but this is something which we would all have fear, which we all also have an inkling towards, and that's called frustration or impatience. कभी-कभी होता है, हमने कुछ investment की और वो investment चल ही नहीं रही. मार्केट चल रहा है, आप दूसरे फ्रेंड से बात करते हो, वो बहुत खुश है, यार मेरी तो रिटर्न बन रही है, आप सोचते हो यार सबकी बन रही, मेरी क्यों नहीं बन रही. This happens. इसको हम एक चीज से कनेक्ट करते हैं, known as Murphy's law. So सब चल रहा है बट मैं नहीं चल रहा. Why does it happen? इसका कोई रीजन नहीं है, एंड फिर उसमें क्या करता है, फ्रस्ट्रेशन में मैं उसको छोड़ देता हूँ. एंड जैसे मर्फीज लॉ कहता है, जैसे आपने छोड़ा वो चलना शुरू करता है. फिर आपको लगता है यार ये मेरे लिए ही नहीं चला. ये सबके साथ हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रिसेंट एग्जाम्पल की बात करें तो एक स्टॉक था मार्केट में जो फेवरेट मीम बन चुका था, वो जो ITC, अबाउट 2-1.5 साल पहले, बिकॉज वो वहीं पे रहता था काफी टाइम तक, वो हिलता नहीं था. बट अब देखिए, it's moving and it's moving well. So in that sense, people who would have sold in frustration, यार मेरे पास पड़ा है बट ये तो चल ही नहीं रहा है, ये छोड़ दो, इसको दूसरे किस में पैसा डालेंगे. आप सोच रहे हो कि यार इसको रख देता था तो मेरे अच्छे पैसे बन जाते थे. The point that I'm trying to tell you with this is that, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, there is a reason behind it. राइट. ये वो आपने कुछ एनालिसिस की होगी कि मैं ये स्कीम में पैसा डालता हूँ, मैं ये पॉलिसी में पैसा डालता हूँ, मैं ये स्टॉक में पैसा डालता हूँ. कोई तो एनालिसिस किया होगा, राइट. हम अभी ह्यूमन माइंड टुडे डजंट जस्ट वर्क ऑन ईयर से ना. आपको किसने फोन किया, पहले होता था 2008-9 में आपको फोन आता था, आपको बोलते थे ये अच्छा स्कीम है, इसमें पैसे डाल दो, लोग ब्लाइंडली डाल देते थे. अब हम सबके पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, हम सब सोचते हैं हम रिसर्च एनालिस्ट हैं, एंड हम सब रिसर्च करते हैं कि मैं भी तो देखूं क्या है, मैं कुछ वेबसाइट्स खोलूंगा, मैं अपनी खुद की एक एनालिसिस करूंगा, एंड उस एनालिसिस के बाद में आई विल डिसाइड वेदर दिस इज एक्चुअली अ गुड इन्वेस्टमेंट और नो. व्हाट एवर माय नॉलेज इज, उस बेसिस पे मैं अपनी कुछ तो आपने एनालिसिस की है बिफोर मेकिंग दैट इन्वेस्टमेंट. सो स्टे ट्रू टू दैट एनालिसिस. Give yourself that time, give yourself that time कि ये चलेगा. मैंने एनालिसिस की थी, मैंने इसकी सब मैंने अगर हम किसी म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करें, सो आपने उसका पोर्टफोलियो चेक किया था, आपने उसका रिटर्न चेक किया था, लास्ट 3-4-6 महीने में शायद ये फ्लैटिश रहा है, बिकॉज लेट्स से जो स्ट्रेटेजिक बेट्स या टैक्टिकल बेट्स
फंड मैनेजर या एनालिस्ट ने ली है, that's currently not finding favor in the market. But will that always remain like this? No. You know, अगर उस टाइम पे मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊं and you know I look at selling that, you know, and then Murphy's law hits me and ये चलने लगे, so what will I feel? अरे थोड़ा और रुक जाता. The idea has to be that you know जो भी आपने एनालिसिस की है या तो जिसके एनालिसिस को आप बैक कर रहे हैं, you must give them that time to let that strategy play in the market. Sometimes थोड़ा टाइम लगता है and you have to somewhere allow that time for that strategy to play out. So you need to remain calm. You need to not panic at that point in time. You know, so I was talking to somebody जो कहता था यार उस टाइम पे ऐसा लगता है कि ये नहीं चल रहा तो मेरी एनालिसिस ही रॉन्ग होगी. तो I am in fact being smart. Yes, you know, it's good to think that you know maybe I made a mistake in my analysis, which is fair. But have you? उसको चेक करना बहुत जरूरी है. Or now you're just thinking you have made a mistake because you're not creating something which you thought you will create. So क्या आपकी expectation overstated थी? If that is the case, it's different. But otherwise, you know, you need to be open to hold on to your idea and not let frustration take over your decision making. ये तीन emotions बहुत ही common है जो हम सबको कहा ना कहा during our investment journey feeling आती है, and we let them get overpowered so much कि वो कहा ना कहा जाके मेरे लिए डिसीजन मेकिंग भी करती है या तो मेरी डिसीजन मेकिंग में इंपैक्ट करती है. एंड दिस इंपैक्ट इन माय डिसीजन मेकिंग इज समथिंग जो नेक्स्ट 3-5 साल के बाद में मुझे लगेगा उस टाइम पे ये डिसीजन अगर नहीं लेता था तो मे बी आई वुड हैव बीन बेटर ऑफ. सो इफ यू वांट टू not have that regret, the first important thing that you have to do is you need to identify whenever these emotions are taking over or becoming very strong कि नहीं ये emotion बहुत strong हो रहा है, I need to keep in check. And कैसे करना है वो हम next steps पे जाएंगे. You know, so if you can keep that in check, first identify करके, you will be much more happier later on, and you will be much more satisfied with your decision later on because आपने ये emotions को आपके investment decision को hamper करने की ताकत नहीं दी. Okay, so that's what are the 3 emotions. Now it becomes important कि ये identify तो कर लिया, अब इसको बाहर कैसे रखें? You know कि ये आते कहाँ से and क्या करना चाहिए मुझे to keep this out. And the first thing that you must do is you must always focus on the big picture. हम investment करते हैं not for 1 day, 2 day, 1 month, 3 months. Investments is a process, right? It's a long-term process. You may have short-term investments also. I'm not saying no. बट ओवरऑल अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, जनरली हम इन्वेस्टमेंट्स को एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के साथ में कनेक्ट करते हैं क्योंकि वी ऑल अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ आई वांट टू मेक वेल्थ, इफ आई वांट टू क्रिएट मनी, आई हैव टू स्टे इन्वेस्टेड ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, राइट? एंड इफ आई हैव टू स्टे इन्वेस्टेड ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, देन the only way that I can do that is by staying invested. It's like, you know, when you're going out to have food, you have an option of fast food, you have an option of biryani. Now, fast food is something which is even made fast, and you eat fast and you go. But अगर आप किसी भी बिरयानी लवर से बात करेंगे, तो वो कहेगा बिरयानी making is an art. You know,
उसको एक स्लो सिंपल सब जो भी आपने इंग्रेडिएंट्स डाला है, चावल डाला है, मसाले डाले, उसको अच्छे से बनने के लिए उसको रखना पड़ता है. So if your goal is that I have to make money over a period of time and I want to create wealth over a period of time, then keep that in mind. जब मार्केट वोलेटिलिटी होती है तो आप अपने आपसे ये 5 क्वेश्चन पूछिए जो यहाँ पर है. क्या मेरे गोल्स चेंज हुए हैं? क्या मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन चेंज हुआ है? क्या मेरी फाइनेंशियल स्टेटस में कुछ चेंज आया है? क्या मेरा पोर्टफोलियो मेरे रिस्क के हिसाब से अलाइंड है? एंड क्या मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है? अगर मेरे गोल्स चेंज होते हैं, ऑब्वियसली मुझे इन्वेस्टमेंट चेंज करना चाहिए. प्लीज गो अहेड एंड डू. अगर मेरा टाइम होराइजन चेंज हो रहा है तो भी मुझे वापस रीचेक करना चाहिए. सो इफ आई एम क्लोजर टू माय गोल एंड मार्केट्स आर वोलेटाइल, आई विल हैव टू रीबैलेंस. करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज मैं वो ज्यादा अपनी पोर्टफोलियो को रिस्क क्यों दूं? बट अगर मेरा गोल आज से 10 साल आगे है, 7 साल आगे है, 5 साल आगे है, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट दैट यू मस्ट आस्क योरसेल्फ इज, डू यू थिंक दैट द मार्केट्स फ्रॉम वेरेवर दे आर टुडे will be higher in the next 5 years? And if the answer is yes, then keeping your investment horizon in mind, do you need to change anything in your portfolio should be your next thought. क्या आपकी financial situation same? You know, if somewhere you think that there is uncertainty in your future, monetary prospects, will you have to rebalance your portfolio? Yes. अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल है या इट्स गॉट बेटर देन बिफोर, देन डू यू स्टिल नीड टू चेंज एनीथिंग? ओके, देयर इज सम डिस्टर्बेंस. लेट मी. सॉरी फॉर दैट. अगर मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल है, should I do anything to change my portfolio? I don't think so. Is my portfolio aligned to my risk tolerance? हर एक का एक risk tolerance होता है, right? मैं एक 20% तक का hit लेने को okay हूँ. लेना, I mean you have to have that. If you're investing, आपकी हर investment हमेशा positive return नहीं देती. So you will have to have some kind of risk tolerance. So are you having that? I mean, if it is in that range, then should you still go and proactively change something? Is something which you should think. And obviously, I mean, diversification के ऊपर हम और भी थोड़ा आगे जाके बात करेंगे. I think diversification is one of the most ignored things in terms of financial investments. People don't give diversification the credit that it deserves. I can tell you, अगर आप actually diversification plan करके करेंगे, it can become a very very strong tool to ensure कि आपके portfolios को वो cushion मिले which can absorb market volatility. So you must focus on. लोग नहीं सोचते इसके बारे में. I mean, people invest, yes, but people don't focus on diversification. And if your answer to these questions is yes, then please ask yourself, मुझे अपने portfolio में changes करने की जरूरत क्या है? क्यों है? Why should I not stay invested the way I am, and what is it that is forcing me to make some changes? So you must ask yourself these big picture questions. हमेशा देखिए, जितना आप big picture पे focus करेंगे उतना आपके success होने का chances ज्यादा है. Don't look small, don't look micro always. Micro planning is good, but eventually whatever your goals are, you have to focus on that. You have to focus on the big picture. That's the first strategy that you can do to keep emotion. जब market volatility आती है, big picture पे focus कीजिए, कोई problem नहीं है. 5 साल आगे तो market ठीक ही लग रहा, you know, and I should not change anything unless fundamentally कुछ problem है तो please, I mean that's different. But just because you feel that market volatility को absorb करने के लिए मैं कुछ smartly change कर रहा हूँ, will that always work?
आई डोंट थिंक सो अगर आप अपने इमोशंस को डिक्टेट कर रहे हो to make in your investment decisions. Okay, that's the first. Second strategy that you must do, and mera favorite, which you must keep out, is you must tune out the headlines. Today media looks at sensationalizing things. जब मार्केट चलता है, ऊपर जाता है, तो मार्केट्स ग्लोरीफाई करती है बहुत ज्यादा. And जब markets are going on the downward side, then media even pans the market very badly. And obviously आज information मिलना बहुत easy है, right? हमारे पास information notifications से हमारे फोन पे आता है. The idea of any notification from any app to me is कि मैं उसका app खोलूं. राइट एंड दैट इज व्हाई जब नोटिफिकेशन आता है उसकी कैची लाइन आती है. आई एम नॉट सेइंग वी शुड नॉट रीड, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, बट क्या होता है ना, जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो मेरा माइंड चलता है कि मेरे इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है. मैंने ये इन्फॉर्मेशन पढ़ा. आज बहुत इजी है ना इन्फॉर्मेशन वायरल करना, एज वी कॉल इट. Social media is so easy. You put something and then you follow the process, and it's so easy to make any post viral. And जब unfortunately most people follow media more when markets are on the downside, क्योंकि उनको लगता है अब पढ़ के देखते तो सही आगे मार्केट में और क्या हो रहा है, right? So we start reading more, and उस टाइम पे मुझे और इमोशंस ड्राइव करती है कि ये देखो यहाँ पे भी लिखा है कि दिस ईयर इज नॉट लुकिंग गुड फॉर द मार्केट. एंड मैंने तो मार्केट में बहुत पैसे डाल दिए सोच के कि मेरे पैसे बनेंगे. मार्केट में लिखा है जियो पॉलिटिकल टेंशन है, यूएस इन्फ्लेशन है, ऑयल प्राइस देखो, डॉलर रूपी का रिलेशन देखिए, ये सब चीजें बहुत प्रॉब्लम कर रही है. एंड ये प्रॉब्लम तो मेरे इन्वेस्टमेंट में दिख रही है. अभी मेरा इन्वेस्टमेंट 10% 15% थोड़ा सा करेक्टेड मोड पे मुझे लग रहा है, और मेरी रिटर्न्स करेक्टेड मोड पे लग रही है. तो मैं तो अभी स्मार्टली कुछ चेंज करता हूँ, and and then we'll see. But what we then forget is the media also changes headlines very quickly. All of a sudden agar aap last few days dekhenge, so now they are talking that July 1 week gains have been better in the last since the last best gains in July since last 7 months 8 months. All of a sudden positive tuning bhi aa jati hai bahut fast. And because of this, it's very natural when I read so much stuff that I get very quickly influenced by this. What I can tell you what with certainty is that there is no one forecaster who can accurately predict ki next market kidhar jayega. There is no one media writer who can do that for any one of us. Second thing जो मुझे हमेशा ध्यान रखना चाहिए is that my portfolio returns will be different from market returns. I start forgetting that. I see अरे market आज 5% से गिर गया. It's not necessary कि आपका portfolio भी 5% से गिरेगा. So you must focus on your personal portfolio and not on what markets are happening. First things, always ask yourself the big picture questions. Second is tune out your headlines. You must, and what I also suggest is, when I start looking at performance of my investments, again, there is something which tells me that I should look at each investment and with scrutiny. It's like you're an IT officer जो आपके income tax filing को scrutinize करता है. वैसे हम अपने पोर्टफोलियो को स्क्रूटनाइज करते हैं. अच्छा, यहाँ पर तो मेरा 8% बन गया, विच इज ओके. यहाँ पर मेरा 5% डाउन है. ये किसने एडवाइस किया था, जरा देखिए, हम इनसे बात करते हैं, ये किसने मुझे बोला था, यार ये तो गलत हो रहा है. योर लाइफ विल बी सिंपलर अगर आप पोर्टफोलियो पे फोकस करें. So please focus on, yes, I'm not saying we should not look at individual schemes. Please look at individual schemes, because if every scheme that you have invested in perform, your portfolio will automatically perform. Not saying that, right? But
Focus on your portfolio first. How is my portfolio doing? एंड अगर आपने वहां पर अगेन गोइंग बैक टू डाइवर्सिफिकेशन, अगर आपने वहां पे डाइवर्सिफाई किया हुआ है तो आपका पोर्टफोलियो विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वन market is to in or one asset class performances. So you have to tune out these headlines. You have to take this with a pinch of salt, you know, कि यहाँ पर थोड़ा सेंसेशनलिज्म होगा. People will come and give you something which may be wanting. See, it's a two-sided thing. They want to share information, yes, but they also want people to come to them, because of which there is going to be a bit of sensationalism or catchy phrases or catchy lines which they will write. You know, they will not always be correct. They have never been always correct. You know, so treat this as an advisor. You know, आप पढ़िए, समझिए. If there is a course correction that you need to take, then you do that. But don't allow the media information to dictate how you change anything in your portfolio just basis this information. You know, so while it may be a good idea that I should have an overall understanding of what forces are driving the trends in the market. क्यों ये मार्केट ऊपर जा रहा है, उसको ही पढ़ना चाहिए. क्यों ये मार्केट नीचे जा रहा है, उसको ही पढ़ना चाहिए. मेरा डिसीजन मेकिंग ओनली ऑन दिस इंफॉर्मेशन में शायद will not be very beneficial. So tune out the headlines. Second strategy. First, we spoke about when we said that I must look at my big picture. Second, I must tune out the headlines. The third strategy that you must do is stop checking your investments every day. I mean, personally, ये मैंने भी किया है. You know, and हम सब ने कभी ना कभी हमने पैसे डाले एंड अगर आपके पास आपके एडवाइजर से कोई वेबसाइट है तो आप वहां देखते हैं. अगर आपने कोई वेबसाइट पे अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया, वहां चेक करते हैं. हम उसको रोज चेक करते हैं, रोज सुनते हैं ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, क्या हो रहा. नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज रोज यूनिलैटरली आपको रिटर्न्स नहीं आ सकती. Right, so there will be days when you make money, there will be days when you don't make money. हाँ, ये चीज भी मैंने देखी है. Normally people check their investments on an everyday basis जब वो नीचे जा रही है. और आज कितना नीचे गया देखता हूँ. I mean, I'll tell you my own experience. You know, I started investing in mutual funds in 2008, 2009, 8-9 के बीच में, and I had some investments, and obviously that was not a great period to start, है ना. So जब भी मैं पैसे डालता था SIP में, मैं उसको देखता था कि ये और नीचे जा रहा है. अबाउट 1 साल 1.5 साल कंटिन्यूसली देखता था, ये गिरता रहता था. एंड ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट न्यूली इन्वेस्टिंग तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चलती है. यार ये हो क्या रहा है, जब भी पैसे डाल रहा हो ये तो नीचे जा रहा है, डाले कि छोड़ दे, ये तो नॉनसेंस हो गया. राइट, एंड इट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी ट्रबलसम. सो मैंने फिर सोचा यार रुको, इसको कुछ एनालिसिस करते. जैसे हम सब सोचते हैं, मैंने भी सोचा हम एनालिसिस, ये ऐसे नहीं चल सकता. सो मैंने सोचा चलो पहले पोर्टफोलियो चेक करते हैं, जहां जहां पैसे डाले वो पोर्टफोलियो ठीक है कि नहीं. सो पोर्टफोलियो चेक करने के लिए वो द वे आई लुक एट इट इज, आई लुक एट द नेम्स इन एनी पोर्टफोलियो एंड आई स्टार्ट थिंकिंग ये कंपनी अच्छी है कि नहीं. That's all, right? I mean, और क्या आप करोगे? I mean, so if you see good names, you feel more comfortable. हाँ, ये तो कंपनी तो अच्छी है. So then I said, so companies so overall were fine, right? I mean, if you look at investments, then most companies. So obviously you don't know all company names, but you will know some company names. And if I had to buy individually, would I invest in these companies? Was my next question. And again, my answer was yes. मैं तो लेता था, कंपनी तो ठीक ही लगी. So, तो कंपनी ठीक लग रही बट फिर भी पैसे तो नहीं बन रहे. The problem is, if it is a good investment, why am I not really making money? Right? So, but then I thought, चलो, I mean, obviously, थोड़ा और रिसर्च के तो देखा तो overall markets are moving down.
Now, if the markets are moving down, will I make money? Probability बहुत कम है, right? अगर आप overall markets आ रही तो अच्छी कंपनी भी उस टाइम पे थोड़ा नीचे ड्रैग करती है. So I said यार markets तो ठीक है, markets ही नीचे जा रही तो कैसे बने? चलो, so थोड़ा सा राहत मिलता है उसमें, you feel better कि okay, it's not your decision making. पहले हम अपने आप को blame करते हैं, यार मैंने गलत किया, but ये मेरी गलती नहीं है, ये overall markets is something which may be a problem. Okay, so that's something which gives me some comfort. Then I thought, chalo, abhi, what next? I'm still not happy and convinced. So I thought, chalo, yahan se nikal dete. So then my mind asked me, if I remove this money, what will I do? Do I need the money? Do I need the money? The answer was no, I don't need them. Yahan se nikal ke kahan dale? So there were options, but I thought substantial to kuch hai nahi. And overall, so then on a whim, I thought, forget it, इसको चेक नहीं करना, ये चेक करने के बाद मुझे ज्यादा स्ट्रेस देता है. एंड जहां पर मैंने मेरा पोर्टफोलियो क्रिएट किया था वो मैंने डिलीट कर दिया, ऐसे नहीं रखना. बिलीव मी, आई कैन टेल यू नाउ फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट वाज माय बेस्ट डिसीजन. आई डिडंट सी इट एवरी डे, and today all those investments have helped me create some purpose. The idea was because I was checking it every day, वो मुझे ज्यादा स्ट्रेस देता, वो मुझे कहा ना कहा, because it was not moving up as my expectation was. जब ऊपर जाता है तो मैं normally check करना बंद कर देता, right? Because I'm making money, I know I'm making money, why should I check? But जब वो नीचे जाता है तो चेकिंग बढ़ जाती है. So जब मैं उसको देख रहा था, I mean, कहा ना कहा, because I stopped checking and somewhere I was able to stop myself from making that decision कि कोई ना कोई action लेना पड़ेगा. I am happier today. So unnecessarily checking every day will not help. By not checking your portfolio every day, you actually increase the odds of staying the course and hence getting the benefits of having stayed invested. So third thing that you must do is stop checking your investments every day. The fourth thing, जो I think again इसको जितना इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए जो नहीं मिलता है, इज रूपी कॉस्ट एवरेज. रूपी कॉस्ट एवरेजिंग मींस आप हर मार्केट में बाय कीजिए. जब गिरता है तो एसआईपी जो हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में होती है, दैट इज समथिंग which compels you to buy in all types of markets. When the markets are going down, you buy. When the markets are going up, you buy. जब मार्केट्स गिरती है तो हम उसको कहते हैं कि आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, right? Because the NAV would have dropped. जब मार्केट चढ़ती है तो आपको कम यूनिट मिलती है, बट जब मार्केट चढ़ती है एक और बेनिफिट ये मिलता है कि ये जब गिर रही थी जो यूनिट्स आपने अक्यूमुलेट किए, ये सब आपको कैपिटल गेन्स के साथ में ग्रो करती है, सब गेन कर रहे हैं. सो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग अगेन आई थिंक इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, बट समथिंग विच most ignored or often ignored by people. जब मार्केट गिरता है तो मेरा फोकस is not on that I'm buying more. My focus is more on अरे मैंने जो पैसे डाले थे उसको मुझे कल तक तो मेरा एवरेज पोर्टफोलियो में इतना रिटर्न दिख रहा था, अब ये रिटर्न कम क्यों हो रहा है. We all know that the markets will never work unilaterally. एक ही लाइन में अगर जाता तो we would not need I mean, probably I would not be here, Sanjay ji would not have been here because it's so easy. The idea is that I need to keep that market volatility and absorb that market volatility so that when the tide turns and ये जब ऊपर जाएगा तो मुझे उसका बेनिफिट भी उतना ही ज्यादा मल्टीप्लाई करके मिलने की पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी है. So the idea is adopt this strategy of averaging, rupee cost averaging, and
keep investing regularly. So जब आप regularly invest करेंगे, and अगर आप ये strategy को adopt करेंगे and उसको ज़्यादा temper नहीं करेंगे, you will see that over the long period of time, this has worked more in your favor than anything else. People talk of compounding as compounding impacts over a long-term period. Rupee cost averaging also has a very, very strong impact. That's your fourth strategy, rupee cost average. And the last strategy that we all should deploy is diversification. Again, I think, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, and at the cost of repeating myself, I would say that diversification को जितना credit मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं. People don't take it seriously. People invest. So the idea more normally the way we invest is I have some money, and at that point in time मैं देखता हूँ कि कौन सा investment अच्छा कर रहा है. So if FDs are giving me good returns, I will invest in FDs. If markets are looking good, then I will invest in markets. So I keep looking and I keep shifting. So some default diversification हम सबके पास है, but it's not a strategic diversification. But when I diversify my portfolio with a thoughtfulness, and by creating a reason behind allocating certain amount in certain asset class, then I can tell you that this will be something which will be most beneficial for you in the long run. So create a diversified strategy. So people have diversified, like I was saying. So there is investment in fixed income. There may be some, gold that we may be having. If for large investors, there may be some real estate, somewhere, but it's not a planned strategy. And then what happens, मैं हर investment को अलग-अलग देखता. See, understand, ये सब investments are adding to my net worth. Right? अगर एक नहीं चल रहा है, दूसरा चल रहा है, तो उस टाइम पे जो दूसरा चल रहा है, वो मुझे पैसे दे रहा है. It's all adding together. So, and hence when I plan it, and then I start looking at everything together. And when I start looking at everything together, that's when I will realize that I am focusing on my overall investable portfolio rather than individual investment asset classes, which in the overall scheme of things will become much more beneficial for me, will ensure that I am less stressful, and will ensure that I am looking at, how my overall investments are performing rather than individual asset class. Yes, there will be times when one asset class performs better than the other, and that is the reason why you have invested in multiple asset classes. So let that play its part. So these are your 5 strategies which you must keep in mind. Look at the big picture, tune out the headlines, diversify, rupee cost average, and there was a 5th one, which was stop checking your investments every day. That's what I had for all of you for our discussion right now. If there are any questions, then I'll be more than happy to take before we can end our meeting for the morning today. Thank you, Vikramji. Very nicely covered and great thoughts. I think I think we can cover the question and answers. Please feel free to chat on the chat box, or you can unmute yourself and ask the questions. Okay. So Vikramji, there is already one question from Mr. Madhusudanji. He has put in the chat box. Like what he says, like, okay, he's 50 plus, and then there's not much time, so it should show like schedule may not work here. So how it should be customized, Sorry, he has put in the chat box. Let me read. Long-term strategy, right? He has saying Yeah. like long-term strategy, how it should work for like senior people, like 50 plus. Sure. So even if you're 50 plus, sir, I mean, the idea always for any investment has to be
that it has to be thought out. So it may not necessarily just, I mean, because you're 50 plus, you may not want to take your, I mean, first thing you have to identify what type of risk would you want to take at whatever age you feel you are at. Yeah, so I know people who are at 65, 70, but they are totally invested in the markets because they want to do that. So it's very honestly, I think keeping age and then deciding may not be the best way, but going to somebody who can help you ascertain how much risk can you take or should you take, depending on how much wealth have you created and how much time are you ready to stay invested, is something which you must be looking at. And like you rightly pointed out, one size will not necessarily fit all. It has to be a customized solution, and a customized solution आपको कोई the right person to guide you with the right advice will only be able to give you. And whatever then that plan is, you must be able to stick to that plan and then start looking at that as your big picture. That's what I would suggest as a question to you, as a response to you. Sorry. So I would not want to go with, just because somebody is on the other side of 50, then he or she may, has to necessarily follow this set trend. It's an individual thing, it's a customized thing, and it's not a one size fit all. Good. Yeah, anyone, please feel free to unmute. आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो क्वेश्चंस, और या चैट बॉक्स में चैट भी कर सकते हो. फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस. ओके. विक्रम जी, एक क्वेश्चन मुझे 1 to 1 आया था कि लाइक नाउ लोगों को लग रहा था कि अभी मार्केट यहाँ से डाउन जाने वाला है, लेकिन अभी लास्ट 2 वीक्स में वो एकदम अप हो गया है. तो इज इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट नाउ, और वी शुड वेट फॉर सम करेक्शन? So, very honestly, I have always believed you cannot time the markets. You will never be able to time markets. Markets ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ये सब market में होगा. The only thing that is in my control is that I should stay invested, and I should look at staying invested over a period of time, so that will help us. So that's something which we must keep in mind. Rohan's ne kuch question put up kiya chat. So I was just seeing that, what is the ideal number of stocks in a portfolio? It's again very personal, Rohan. I'm no one to judge. There are people who are also comfortable with 50 stocks. There are people who are only comfortable with 5. It should be well diversified, and whatever you feel, is something as a number that you are comfortable with, or more than number, look at securities that you feel are the ones which you want to hold on to because they seem the ones who seem to be the best bet to create money. So, that's what will help. Second question that you're putting is, if I want to diversify, is it good to invest in US market and cryptocurrency? Again, you understand, I mean, if there is any understanding that you have, and it's not only hearsay on US markets and cryptocurrency, international is something which a lot of people are doing for having certain diversification. Crypto is something which, very honestly, I would suggest that unless you understand the way that's working, it's extremely volatile. So if you can take that volatility, it's a choice which is personal. Otherwise, I would personally look at refraining from investment in asset classes which I don't understand. So if you don't, just because it's a trend and log kar rahe hai, don't do it. But if you understand what's happening and you think you can play a part in create, and that this investment can play a part in creating, some returns for you, why not? Correct. Yeah, I think, yeah, just to add on that, कि जो भी assets है, right, wherever you are investing, कि make sure कि like वो assets को कुछ backing है, is there something, right? कि जैसे आप कोई stock market में invest करते हो, या
कोई स्टॉक्स लेते हो तो यू नो दैट कंपनी एग्जिस्ट, उसका कंपनी का क्या अप एंड डाउन हो रहा है, क्यों हो रहा है, राइट? ऑल दोस थिंग्स यू नो. तो ऐसा कुछ जैसा क्रिप्टोज है, यू डोंट नो रियली व्हाट इज दैट एसेट एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट, व्हाट इज फॉर इट, राइट? जैसा रियल एस्टेट है तो आपको पता है कि यहाँ पे प्लॉट है या घर है या शॉप है, राइट? यू नो दैट. तो उसके लिए आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं. कुछ तो ठीक है, कम ज्यादा वैल्यू होगा लेकिन उसका कुछ होगा. लेकिन जो इमेजिनरी थिंग है उसका वैल्यूएशन करना बहुत मुश्किल है. Is mutual and stocks same? So mutual funds have a lot of investment avenues. They don't only invest in stocks. They also have a lot of fixed income. So for example, there are investments in mutual funds which you can do just for a day, for 1 month, 6 months, 3 months, 1 year, 3 years, 5 years. So over a period of time, and different types of asset classes, different types of instruments with different maturities across time horizons is something which is available for investments. So stocks are a part of mutual funds. They are not the whole of mutual funds. Let me put it this way. करेक्ट. बेसिकली स्टॉक्स में क्या होता है सीना जी, लाइक टू आस्क यू क्वेश्चन, स्टॉक्स में जैसा आपको समझो कुछ, लेट्स से somebody wants to invest 5,000 rupees, वो कौन से स्टॉक लेगा और कितना लेगा? उससे अच्छा इफ ही इन्वेस्ट इन अ गुड म्यूचुअल फंड तो वो 5,000 रुपए वहां पे इन्वेस्ट कर सकता है. वो म्यूचुअल फंड का मैनेजर इंटर्न, उनके पास 20-25 स्टॉक्स रहते हैं कि दे अंडरस्टैंड द मार्केट एंड दे बाई व्हाट आर द गुड कंपनीज जो आपको अच्छे फ्यूचर में रिटर्न दे सकते हैं. उस टाइप के म्यूचुअल फंड में वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं. तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कंपनी. आपको एनालिसिस करने की इसकी कुछ जरूरत नहीं है. डीमैट अकाउंट का भी ओपन करने की कुछ जरूरत नहीं है. और जैसा विक्रम जी ने बताया कि लाइक देयर आर सम म्यूचुअल फंड्स व्हिच डोंट इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स, दे आर लाइक काइंड ऑफ इक्विवेलेंट टू योर फिक्स्ड डिपॉजिट. जैसा बैंक में डिपॉजिट रहता है आपका, उस हिसाब से डेट म्यूचुअल फंड्स रहते हैं कि जो आपको बैंक से बेटर रिटर्न देते हैं, बट उनको आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर इन्वेस्ट करते हैं. एनी मेरे क्वेश्चंस? प्लीज आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, हिंदी में पूछ सकते हो, इंग्लिश में पूछ कर सकते हो, जो भी आप कंफर्टेबल है. फील फ्री टू आस्क. दूसरा एक वन ऑन वन पे चैट पे आता है कि लाइक विक्रम जी की ये क्वेश्चन आया कि लाइक इज इट नाउ इन द करंट सिचुएशन इज इट बेटर टू डू वन टाइम इन्वेस्टमेंट या कुछ स्टैगर मैनर में करें? This is something which, very honestly, should you do a one time, should you do a staggered investment? It's personal, right? I mean, I think, you know, if you have certain funds, you can even look at investing over a period of time, you know, depending on what your time horizon is in one go, or you think that staggering is better. It's very honestly a very, very personal choice. You could do a combination of both. या तो एक रख सकते हैं, but I mean, so there are investors who I know who are one-time investors. They don't like doing it that way. At the same time, there are people who think that I will spread my investments. So, I just spoke about rupee cost averaging as a strategy. So that strategy, rupee cost averaging ka jo hai, that works over a staggered investment. So, that's something which may be beneficial over a period of time. Market volatility absorb karne ke liye. But if you think that you can absorb volatility even on a one-time investment basis, it's a personal choice. So there's a statement saying SIP return is slow when market is increasing. Give solution. Stay invested. That's your best solution, Vijay. You will not regret if you do that, and you will not think it's slow. I have a personal experience on that. Can I give control to me? Please push control to me. Sorry? Just make me host. Just a minute.
Okay, thanks. Anybody has any additional questions? हमने अभी जस्ट लिंक शेयर किया आपको, एक यूट्यूब का लिंक है कि वेयर यू कैन you can like do like subscribe to our YouTube channel. तो सारे अर्लियर भी जो सेशन हो चुके हैं हमारे, उसका रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे अवेलेबल है। ये सेशन का भी रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम टुमारो। तो आपको फील फ्री टू लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल। जैसे ही कोई नया अपलोड हो जाता है सेशन, तो यू गेट अ नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली। और आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, कांटेक्ट है, तो हमारा डिटेल्स हमने स्क्रीन पे पुट अप किया है। फील फ्री टू कनेक्ट विद अस ऑन लाइक ऑनलाइन, मोबाइल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। वी आर अवेलेबल ऑन ऑल द चैनल्स। और अपने एक फीडबैक फॉर्म भी शेयर किया है अभी ये स्पेसिफिक सेशन के लिए। जैसे आपको ये सेशन के बारे में क्या अच्छा लगा, व्हाट इम्प्रूवमेंट वी शुड बी डूइंग इट, प्लीज उस पर फीडबैक दीजिए। Do we have any more questions? How much more Hello. time do we have, Sanjay ji? Do we Hello. have? Yeah. There's some. Yeah, go ahead. Abhijit here. I just wanted to know one more thing. As you said, diversification. Okay, so diversification in your portfolio. So do you have any percentage, as in how much diversification should be there in equity, in debt, in asset allocation, in the sense that if you're buying a house, so what should be the amount of money which it should go into? So again, my suggestion, Abhijit, would be that, you know, it's best that if you get in touch with somebody who's an expert to help you ascertain what your requirements and goals are, what your risk-taking ability and capacity is, and basis that create something which is an asset allocation strategy specific for you. So, you know, you cannot have a blanket thing. मैं आपको बोलूँ 20% fixed income में डालो, 30% equity में डालो, बाकी इधर डालो, वो नहीं चलेगा. To be very honest, I mean, it's going to be best if you can get somebody to customize it for you, looking at what your requirement and your risk-taking ability and capacity is. And just to add on, Abhijit and all, like for a few days, we are doing a completely free financial planning session for individuals. Okay, तो आप हमारे साथ इंडिविजुअल सेशन रख सकते हैं, हाफ एन आवर का। देयर इज नो कमिटमेंट, नो चार्जेस। आपका कंप्लीट नीड एनालिसिस करके हम आपको सजेस्ट करेंगे कि कितना रहना चाहिए, किस में रहना चाहिए, किस टाइप का इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए, आपका टाइम होराइजन क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, अभी तक आपने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो उसके हिसाब से हम आपको राइट प्रपोजिशन सजेस्ट करेंगे। और जस्ट एज अ thumb rule, okay, again, not based on any specific recommendation, but just as a market, 100 minus आपका age, जो भी है, समझो somebody is 40 years old, okay, so 100 minus 40, 60, so he can do a 60% investment into equity mutual funds, right? So that is a just again thumb rule. क्यों? क्योंकि वो person अभी is in mid age, so there is a lot of years ahead and he can take little bit risk and his investments can grow much better. तो ये ऐसा thumb rule है। बट इंडिविजुअल के लिए, जैसा विक्रम जी ने बताया, कि अपना इंडिविजुअल टाइम होराइजन एंड रिस्क और करंट इन्वेस्टमेंट, दैट विल डिसाइड इंडिविजुअल्स एलोकेशन। Okay, fine. Any more questions? I think with that, I think if there are no questions, we will stop it here. Thank you, Vikram ji, from you being even holiday today, you joined us, and it was very lively session, and it gives like a lot of insights, because in the current volatile market, like there are always ups and downs, and there is always a kind of a dual mind, whether to start or stop or invest. And thank you all for joining this session for this Saturday morning. Hope you enjoyed it. आपको अच्छा लगा तो प्लीज ये YouTube का लिंक, ये सेशन के वेबसाइट के लिंक आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। जो भी है हमें फीडबैक दीजिए, where we can improve further, because we can always, there is a scope for improvement, और and
get in touch with one-on-one. जो भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री सेशन हम जरूर दे देंगे, और उसके लिए कोई चार्जेस नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं है. So thanks once again, and have a nice weekend. Thank you, everyone. Thank you very much for your time. It was a pleasure, and I hope to connect again soon. Thank you. Thanks. Thank you. Thanks a lot. Yeah.